बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज बाइज्जत बरी कर दी गई है। नाअहली भी खत्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 7 साल की सजा भी कलअदम करार दे दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल कैद की सजा भी कलअदम करार दे दी गई। वो दस्तावेज दिखाएं जिससे सबूत मिले, प्रॉपर्टीज का मरियम नवाज से ताल्लुक साबित करें। क्रिमिनल केस कैसे बन सकता है? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप केस साबित करने में नाकाम रहे, सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं सुना सकते। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। एवनफील्ड रेफरेंस केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कलअदम करार दे दी गयी। अदालत ने मुख्तसर फैसले में कहा कि एहतसाब अदालत के जुलाई 2018 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। वजूहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। समाअत के आगाज पर नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने अदालती सवालात के जवाब में दलाइल दिए। कहा, तारिक शफी ने बयान हल्फी में गल्फ स्ट्रीट की फरोख्त का बताया, लेकिन वो खुद को बिजनेस पार्टनर साबित करने में नाकाम रहे थे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि चार्ज कैसे साबित हो रहा है। आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ, मरियम का लिंक बता दें। अभी तक इनका कहीं भी लिंक साबित नहीं हो रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जेआईटी ने कोई हकायक बयान नहीं किए, सिर्फ जमा की गई मालूमात दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वाजिद ज़िया ने ये सारा रिकॉर्ड खुद देखा था। डॉक्यूमेंट से दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज 1999 में खरीदी गयी। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इन प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए कितनी रकम अदा की गई, जुबानी बात न करें। मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, प्रॉपर्टी की मलकियत साबित कर दी है, मालियत गैर अहम है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप गलत बात कर रहे हैं। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में कीमत का तयन जरूरी है। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है, नवाज शरीफ ने ये जायदादें मरियम के जरिए छुपाई। अदालत ने कहा, अगर नवाज शरीफ का किरदार साबित होगा तब ही मरियम के किरदार को देखेंगे। नैब के साबित करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इवनफील्ड रेफरेंस में जुलाई 2018 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 11 साल कैद की सजा सुनाते हुए उन पर 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना आयद किया था। मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाते हुए 20 लाख ब्रिटिश पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक अगले साल होंगे। 3-4 माह का फर्क है, सियासतदान मसले को हल कर सकते हैं। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाई से मशवरा किया, आइन के मुताबिक नहीं करना चाहिए था। तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे कल रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ पर। आइन तय करता है। मैंने सुना ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने भाई से मशवरा किया, तो आइन के मुताबिक तो नहीं करना चाहिए ना। तो मशवरे होते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि मशवरा कर लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ गुड कंसेंसस। आइन के तौर पर चलें। 1 साल बाद इलेक्शन होंगे बाय ऑन द आइन। लोग कह रहे हैं पहले हो जाए, फ़र्क रह गया 3-4 महीने का। क्या ये इतना बड़ा इशू है कि जिसको बैठ कर सॉल्व ना कर सकें? नवाज शरीफ का मरियम नवाज की बरियत पर इजहार तशक्कुर। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने कई साल पहले कह दिया था कि अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने हक को फतह दिला दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया। आज मरियम की बरियत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इस पे आप कोई कमेंट करेंगे? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी उसके साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिए, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये सब साकिब निसार समेत जो किरदार इसमें शामिल थे उनका इंतजाम होगा। आपका नाम क्या है? जी शरीफ। बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। Assalamu alaikum and a very good evening. It's really a great pleasure to be here amongst great friends and my new friend Ambassador Bloom to celebrate this wonderful relationship between Pakistan and United States of America spanning over 75 years. And
it is a matter of great honor to recall that United States was one of those very first countries which offered full recognition to Pakistan. And late President Truman wrote a very joyful and excellent letter to late Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. When I was a child, Excellency, I remember this friendship from a very memorable program known as PL 480. Now, PL 480 was a program under which Pakistan received, I believe, wheat parcels from United States. And that's how this long journey of friendship started, and it touched epics of glory, and at times, it dipped to low points. We know the reasons, and this is not the time to go into those reasons. We have been discussing it privately and publicly during different points in time. But let me say very sincerely and honestly that we really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect, and mutual understanding. Of course, there is a file on your part and there's a file on our part. But if we have to move forward, and we must, then I'm sure we'll find ways and means to warm up our relations to levels we have seen in the past. And I think you made a very pertinent point that our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. Our relations, they stand on its own. And you have enumerated various programs and projects. I would add on to that. When Pakistan was facing worst kind of power outages, Prime Minister Nawaz Sharif decided to spend from our own scarce resources to invest another 5,000 megawatts. Finance Minister Hazagdar he opposed it tooth and nail. He said, I don't have the money. But obviously, now this is democracy. He had his own pertinent point, and Prime Minister Nawaz Sharif thought, no, on top of what we are getting in terms of CPAC projects, let's not delay it, because if there is another dharna, so to say, then this CPAC program will be derailed, and by the time of elections 2018, we won't be able to show anything to the people of Pakistan. And Mr. Mehboob will be our very, severe critic that what this government has done. So what I'm saying is, as a result of that program, that decision, 5,000 megawatts, out of that, 3,500 megawatts was installed by GE, United States blue chip company. And it was the most transparent investment, and the prices were the lowest in the world. It can't be beaten as I speak. And in the fastest possible time, these plants were installed. That's how we want to rebuild our friendship. In terms of transparency, in terms of trust, in terms of mutual respect. And I want to assure you, my friend Ambassador, that I'll be the most ardent supporter of this friendship. Let bygones be bygones. As I said, there is a lot you would want to say or your side would want to say, and on our side. But as long we open this and renew this friendship
through honest dialogue, through sincere dialogue and serious dialogue, I can tell you we will not go wrong. And I was in Washington, New York, with my colleagues, had very productive, short but very productive meetings with Secretary Blinken, and of course my meeting with President Biden was again very reassuring. I thank them, want to thank again for the support, for the program which you have offered to flood affected people, $53 billion, and now add on to it $10 million announced by Secretary Blinken, meeting our young and enterprising Foreign Minister Butcha. We are very thankful to you. But then I have to say and make a couple of comments. One, that this disaster, Ambassador, is far making. We are a developing country, and you mentioned that United States contributed $32 billion to Pakistan, which is correct. And I tell you honestly, without any fear of contradiction, that had we used these $32 billion in the right direction, properly, well planned, and properly supervised, we would have broken our begging bowl, honestly. But then there's no point in crying over the spilt milk. Let's move forward. We want to stand on our own feet through dint of hard work. We will burn our midnight oil. We will work untiringly. And this nation, Pakistani nation, is a very strong nation. People are very courageous, very brave, very hardworking. Our population is a mix of 50% male and 50% female. No more coffee-going folks. They are now very educated, very hardworking. They are bankers, they are scientists, they are teachers, and they are politicians. 2 politicians, 3, 4, 5 sitting in front of me. This is Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, where there's complete freedom of action, and I think their contribution is not only valuable but extremely, extremely helpful. So what I'm saying is, Ambassador, United States is our biggest trading partner. You have been extremely kind, and your teams have come to Pakistan. The head of USAID, who just had her birthday, and I congratulated her and said many more such occasions. She was here, she went to the flood-affected areas, she visited, and she was absolutely devastated. She said, Prime Minister, this is horrifying. And then her visit was equally matched by actions, by practical actions. We are very grateful, but the point at issue is that this catastrophic situation is not made by us. It is man-made, but not made by us. And as I speak, 4 million acre area where standing crop of cotton, rice, sugarcane, and date, all gone. Billions of dollars. 1,600 people have left this world, along with 400 children, girls and boys. More than 1 million, mud houses or pakka houses, they have been absolutely thrown to the Arabian Sea. And more than 1 million livestock drowned. Life savings of people have gone away. And they are living under tents and under open sky, waiting for help coming from somewhere. And it is our duty, moral duty,
my political duty, my responsibility, my colleagues, my governments, all outfits, departments, authorities, institutions. We are working hard and working overtime to serve them. But whatever we do is not enough. The yawning gap between demand and between requirement and supply is widening by the hour. And this is the first phase. And the final phase has yet to come, phase of rehabilitation and reconstruction, in which Sharif Rahman Sahiba always keeps on telling me it has to be, Prime Minister, resilient infrastructure, it has to be adaptive. And of course she's right. And that costs money. There's no free lunch. Therefore, I would, again request you, as a friend, you are a great friend, and your country has supported Pakistan, in a very big way. It is clear, loud and clear to all and sundry, that now we need international community to stand by us and support us. We're not asking for sums of monies. We're asking for relief. We're asking for funds to rebuild our infrastructure. We're asking for our people that they get their jobs back, livelihood, agriculture, industry, commerce, trade, export. For that we need incentives, relief, moratoriums. This is our right. We have not brought this disaster upon ourselves. It's nature. We are not blaming anybody. We are a country which is under 1% of carbon emission. So I wouldn't want to go into details and have a lengthy speech. Obviously, I think soft drinks are waiting for them. Soft drinks, I mean. And of course, snacks, of course, they're waiting for them. What I'm saying is that we want to build we want to go back to those wonderful times with the United States of America, where our relations were not beholden to others. It had its own standing, own structure, and I would work most willingly to build that relation. Thank you very much. Pakistan Ameriki Dosti Zindabad. शहबाज शरीफ पाक अमेरिका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाहमी नौयत के हैं। इमरान खान के धरने की वजह से सी-पैक मुतासर हुआ। सी-पैक मंसूबे मुतासर होने से अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। माजी को भुलाकर संजीदा बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं। अमेरिकी कंपनी ने 3500 मेगावाट बिजली के मंसूबे में सरमायाकारी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।